Welcome back, students. In the last session, we had discussed about the pattern of magnetic field around a bar magnet. Today, we will discuss the properties of magnetic field lines. We had seen that magnetic field lines are always closed and continuous curves, and they always emerge from north pole of the magnet and merge at साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. नॉर्थ पोल से वो हमेशा बाहर निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ वो हमेशा मर्ज करती हैं. जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. दैट मीन्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. And we have seen that magnetic field lines are always crowded near the poles. Since they are crowded near the poles, that means the magnetic field is also strongest near the poles. So poles पे magnetic field strength ज़्यादा होगी सबसे. The direction of magnetic field outside the magnet is from north pole towards south pole. मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. राइट स्टूडेंट्स, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ एंड इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ. The last most important property of magnetic field lines is that magnetic field lines never intersect each other. कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, लेट्स सी देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सपोज आई हैव टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस गिवन पॉइंट. In the last video, we had discussed that if we have to find the direction of magnetic field at a point, we can find it using a magnetic compass. अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, then I can find it with the help of magnetic compass. So what I am going to do is I am going to place my magnetic compass at this point. And we have also learned that the direction in which the north pole of the compass points gives us the direction of magnetic field. जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल कंपास का पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. नाउ हियर वी हैव टू फील्ड लाइंस. सपोज इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. एंड सपोज इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, देन इन विच डायरेक्शन द कंपास नीडल इज गोइंग टू पॉइंट. At the same time, compass needle cannot show two direction. It always show one direction at a particular time at a particular point. So it is practically impossible that two field lines will intersect each other. If they did, then at the point of intersection, the compass needle would point in two direction, which is not possible. Right, students? So magnetic field lines will never intersect each other. These are the properties of magnetic field lines. Let's proceed to the next activity of your NCERT book, that is activity 13.4. In this activity, we are going to study how the direction of magnetic field is related to the direction of electric current. What I have done in this activity, I have taken a copper wire and I have connected this copper wire with a circuit in which I have connected a key and a battery of 3 cells in series with a copper wire. Now I have kept this copper wire in such a way that it is above a magnetic compass. एक magnetic compass मैंने यहाँ रखा है, उसके ऊपर से इस वायर को मैंने पास किया. The moment I will switch on the key, I will find that there is reflection in the magnetic compass. Now in this circuit, in the first figure, the current is from
north to south direction, right? So I will find that the magnetic needle will deflect towards east. I'll again open the circuit and I will replace the terminals of the battery. मैं replace कर दूंगा, negative को positive की जगह, positive को negative की जगह. I'll replace the terminals of the battery now, so that why I am replacing the terminals of the battery, so that the direction of current reverses. जैसे ही मैं बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करूंगा और की को स्विच ऑन करूंगा, आई फाइंड दैट करंट विल नाउ स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ. साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जाने लगेगा. करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. The moment the current will pass through this wire, I'll observe that the magnetic needle, which was showing deflection towards east, is now showing deflection towards west. From this activity, we can conclude that the direction of magnetic field reverses when the direction of current in the circuit is reversed. Right, students? And what will be the direction exactly? What will be the direction that we will study by a rule in our next video, right? So far we have studied about magnetic field lines, its properties, and we have also learned that the direction of magnetic field reverses by changing the direction of current in the circuit.